Namaste. Welcome everyone to another live session on Life Simplified. So I hope you're enjoying the sessions that have been continuously played on our group. So today we are going to talk about calcified thoughts versus clarity. Calcification versus clarity. Okay? So before we begin, let us just start with a short prayer और तब तक के सब login भी कर जाएंगे. So just keep your palms open. To the Supreme God, thank you for your blessings. To Master Chokoksui, thank you for your presence. Thank you for your blessings. Thank you in full faith. So be it. Gently open your eyes. So welcome once again. Yeah. So हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं the difference between a calcified mind versus a clear mind. I repeat, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो माइंड है, अगर हमारा माइंड कैल्सिफाइड होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या रेपरकशंस है, इसका क्या इफेक्ट होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट अबाउट दैट, वर्सेस अ माइंड दैट इज क्लियर. ओके, नाउ कैल्सिफिकेशन, अगर आप गूगल में चेक करेंगे द मीनिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन मतलब समथिंग विच इज हार्ड. सो आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग टुडे. आई हैव सम प्रॉप्स फॉर टुडेज सेशन ताकि हम लोग इस सेशन को ठीक से समझ पाए. Okay, so here if you observe, okay, so I have 3 mugs here. Okay, can you see this? Wait, I will just raise it. ओके, सो हम लोग अभी समझेंगे कि हमारा जो माइंड होता है वो 3 तरह का होता है. नो, से फॉर एग्जांपल दीज आर द 3 मग्स व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू अ स्मॉल एनालॉजी. नाउ आप देखेंगे कि ये एक जो मग है ये एकदम खाली है. दिस कप इज एम्प्टी, whereas this cup it has water in it and it has plain water. There's no color, it's just plain water. Whereas this cup it has a stone in it. ओके, अब आप बस इमेजिन करिए कि सपोज आपको इस कप में कुछ पोर करना है. ओके, इफ यू वांट टू पोर, नाउ जस्ट गिविंग यू एन एनालॉजी कि इमेजिन दीज 3 कप्स आर 3 माइंड्स ऑफ 3 डिफरेंट पीपल. ये जो 3 मग्स हैं ये 3 लोगों के 3 दिमाग हैं. ओके, एंड इमेजिन कि यू आर ट्राइंग और द यूनिवर्स और गॉड इज ट्राइंग टू पोर अ न्यू थॉट. भगवान जो है या जो यूनिवर्स है कोई इंट्यूशन को किसी के माइंड में डालना चाह रहे हैं. ओके, आई रिपीट, देयर इज दिस गॉड और देयर इज सम डिवाइन इंटेलिजेंस जो कुछ इंट्यूशन को या कुछ एक पॉजिटिव थॉट को या एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है. सपोज से फॉर एग्जाम्पल से दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया. ओके, say for example this is a brilliant idea, just giving you a prop to make you understand. और इसको हमको किसी एक दिमाग में, तो भगवान सोच रहे कि हमको किसी एक के दिमाग में डालना है. okay, now what do you think? ये कप खाली है, ये कप में पानी है लेकिन पानी क्लियर है, और ये कप में तो पत्थर है. तो अगर एक आइडिया है, से फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट दिस इज एन आइडिया, और इस आइडिया को किसी एक के दिमाग में डालना है. भगवान के दिमाग में कोई एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है कि ये वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, बट इस आइडिया को हमको किसी के दिमाग में डालना पड़ेगा ना, ताकि वो इंसान उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सके या वो इंसान उस आइडिया को धरती पर ला सके. तो किस कप में जाने के पहले उसको सबसे ज्यादा इजी लगेगा?
Now imagine when I put this in the first cup. Now because the cup is empty, the mind is clear, क्योंकि इसके दिमाग में कोई prejudices नहीं है, इसके दिमाग में calcified ideas नहीं है. Calcified idea is nothing but preconceived ideas. This is right, this is wrong, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है. So जब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा judgments होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो इस हमारे दिमाग में से पत्थर की तरह कैल्सिफिकेशन हो जाता है. इट क्रिएट्स ब्लाइंड स्पॉट्स इन आवर माइंड, एंड व्हेन देयर आर ब्लाइंड स्पॉट्स इन द माइंड, इफ अ न्यू आइडिया नीड्स टू पेनिट्रेट, इट विल नॉट पेनिट्रेट. If a new intuition needs to come down, it will not go in, it will not penetrate only. Whereas if the mind either is clear or is empty, it can still absorb. Now यहाँ पे आप देखेंगे ये empty है, इतना clear है कि अच्छे से absorb कर सकता है. So the penetration of new thoughts is very easy. Whereas if there is water, then there is some dilution. यानी कि कुछ आइडिया ठीक से आ रही है लेकिन कुछ मेल्ट हो जा रही है. पूरा क्लियर आइडिया नहीं नीचे आ रहा है, पूरा क्लियर थॉट्स जो है वो नहीं पेनिट्रेट कर रहा है. Whereas जो आज का हम लोग का टॉपिक है, calcification is nothing but having very strong blocks in our mind, having very strong blocks. Whenever we have very strong do's, very strong don'ts, very strong likes, very strong dislikes, जब हम लोग अपने माइंड को ओपन नहीं रखते हैं और बहुत फिक्स्ड व्यूज, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं डालते हैं अपने माइंड में, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आवर माइंड बिकम्स लाइक दिस. It becomes like hard rock. Not the entire mind, but at least portions in our brain. And इसीलिए इसे बोलते हैं calcified idea or a calcified brain. So if there is calcification, the calcification is mainly coming because of closed or too many do's and don'ts and too many judgments already in our mind. Now, if this is your mind filled with calcifications, remember, a new idea cannot penetrate. Intuition cannot come down. For intuition to come down, for new ideas to come down, which can actually bring a change in the world, our mind needs to be clear. Our mind needs to be empty and open. Our mind needs to be open to explore new ideas, to explore new insights, to be able to welcome new adjustments, new flexibilities. Otherwise we will feel stuck. अब ये समझते हैं कि ये जो calcification है ये आता कहाँ से है. Where does this calcification come from? Meanwhile, I'll keep this aside. This is just to help you reflect what kind of a mind are you. So if we need, we'll go back to it. Now this again reminding you, this is calcification in your mind. Now इससे क्या होता है? If your mind is rock, ये होता क्यों है? Calcification बनता क्यों है? It is nothing but rigid ideas, rigid opinions. कभी कभी हम लोग अपने दिमाग में बहुत rigid ideas या opinion hold करके रखते हैं. Like for example, sometimes we have rigid ideas, calcified ideas towards certain type of people, towards maybe certain culture of people. कभी कभी रिजिड आइडियाज होते हैं कि हाँ सारे मारवाड़ी लोग तो ऐसे ही होते हैं, सारे क्रिश्चियन लोग तो ऐसे ही होते हैं. दिस इज अ कैल्सिफाइड आइडिया, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. और अगर ये रॉक की तरह हमारे दिमाग में, नाउ सपोज वी क्रिएट अ थॉट कि ओ ऑल सच टाइप ऑफ पीपल आर लाइक दैट और सच टाइप ऑफ पीपल आर लाइक दैट. अगर ये हमारे दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग आइडिया फिक्स्ड है तो अपने दिमाग में एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, एक रॉक फिट हो जाता है और हम लोग कभी उस तरह के लोगों में गुडनेस या डिविनिटी देख ही नहीं पाएंगे. ओके, से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक आई एम फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल, बट देयर इज समबडी हु हैज अ फिक्स्ड ब्लॉक इन हिज माइंड कि जैन लोग बड़े खराब होते हैं या जैन लोग बिल्कुल भी say some fixed idea or they may think that maybe Jain people they are not friendly, suppose. So किसी ने अपने बचपन में उसका कोई जैन फ्रेंड होगा लेकिन वो फ्रेंड फ्रेंडली नहीं है, ये सोचने के बजाय उसने कैल्सिफाइड एक फिक्स थॉट अपने दिमाग में बना दिया कि सारे जैन लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं, भाई जैन लोग तो भाई बहुत बुरे होते हैं. Suppose if that person has done this, now what will happen? The thing will happen कि for that person, whenever that person sees me, ये जो thought है ये उसके सामने आ जाएगा. Although that person doesn't have any experience with me, but क्योंकि ये thought उसके दिमाग में आ गया है, वो उसी blind spot से सामने
सामने वाले इंसान को देखेगा और उसके अंदर उसको वही दिखाई देगा जो उसके माइंड में ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड आइडिया है। तो क्योंकि वो फिक्स्ड आइडिया है कि ये इंसान या इस तरह इस कम्युनिटी के लोग ऐसे ही होते हैं, तो उसको वैसे ही दिखाई देंगे, और जब उसको वैसे ही दिखाई देंगे तब उसका माइंड ही ओपन नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट दिस ब्लॉक will actually stop that person from becoming friendly to me, or it will also stop me from becoming friendly to that person, because if there is a rock in somebody's mind and I try to get friendly to that person, I will feel like a bounce back. हमको लगेगा कि नहीं भाई इससे दूर ही रहो, हमको कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती, although I don't have any experience with that person. But because of this thought may be created as a child or some phase of his life, or it has just become such a fixed viewpoint. So this is one. Like there are many other calcified ideas like that. This I spoke about religion, about community. By the way, we all have this. We are sometimes very biased about certain communities, about maybe also the looks of people, like the skin. Some people feel that blacks are bad or whites are good and stuff like that. तो ये भी एक तरह का fixed idea है. It stops us from seeing the good side of that person, because we have already created a thought in our mind that this is how this person is. That's it. वहीं पे झमेला शुरू हो गया, और उसके साथ में जो भी हम लोग को अच्छा एक्सपीरियंस अगर होने भी वाला था, it is going to become a mental block. So इसी calcified idea को दूसरा शब्द लोग देते हैं is of a mental block. You never know, maybe that person could have brought a lot of good things to your life, but because you have a mental block, you will never be able to see that, or you will never be able to experience that, because there is a mental block. So now what we could also do to further reflect on this, that what do we have mental blocks for? एक तो मैंने आपको कम्युनिटी का बताया, रिलीजन का बताया. दूसरा, हमारे अंदर में मेंटल बायसनेस होता है a lot towards maybe the status of people, maybe their social status. इस एरिया में रहने वाले सारे लोग ऐसे ही होते हैं. So sometimes people are very area biased. यहाँ पे वो रहता है मतलब उसका नेचर ऐसा ही होगा, वो वहां पे उस एरिया में रहता है मतलब उसका नेचर वैसा ही होगा. दिस इज अनदर calcified idea. This is another mental block. It will again refrain us, stop us from seeing the goodness in that person, and it will create a block, a mental block. Now ये जो mental block है, जब हम लोग का हायर सोल या हम लोग का इनर सेल्फ अगर इस मेंटल ब्लॉक को हटाना चाहता है, so this mental blocks actually they go away in a very painful way. They go away with some negative experiences. तो जब कुछ मेजर एक्सपीरियंस होता है तब जाके हम लोग का मेंटल ब्लॉक हटता है. It is not like this, not everybody is like that. So instead of going through such painful experiences, let us be careful about what calcified idea or mental blocks we are creating. And these blocks, they get harder and harder the more we start putting firm belief in it, the more we repeat it, the more we keep thinking about it. It becomes hard and hard, and it is only causing blockages in our brain, stopping us from receiving intuition, because intuition भी नीचे आएगा. हो सकता है हम लोग को पार्टली वो मिलेगा, पार्टली नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में कहीं कहीं पर खुला है माइंड, लेकिन कहीं कहीं पर क्लोज्ड है, ब्लॉक्ड है. क्यों ब्लॉक्ड है? बिकॉज ऑफ calcified ideas. Prejudices. So many prejudices we hold towards religion, towards caste, towards the sex of the person, male, female. उसके पीछे भी हम लोग के कभी कभी कुछ biasness होते हैं. We need to come out of that sooner or later. Biasness towards the social status of a person. तो यही mental block की वजह से हम लोग बहुत बार बुद्धू भी बन जाते हैं. Like suppose अपने अंदर एक mental block है कि जो इस स्टेटस पे है मतलब वो अच्छा ही होगा. Now later on you get to know कि नहीं, वो इंसान ठीक नहीं है. Then you really feel shattered inside. You feel कि ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि ये अच्छा होगा, ये इतना बड़ा स्टेटस पे होके ऐसा काम करता है. Why? Because you had a mental block. And when that mental block gets shattered, it is definitely not a very good feeling, because it is kind of a little painful process. क्योंकि ये वाला ब्लॉक कभी ना कभी तो दिमाग से हटाना होगा, और इसको हटाने के लिए in the world of energy it is almost like a surgery. Almost like a surgery. एक सर्जरी की तरह एक कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, कुछ प्रिक होता है, कुछ पेन होता है, तब जाके ये ब्लॉक धीरे से निकलता है. So to avoid such things from becoming so calcified,
We need to allow our minds to open up. We need to come out of our comfort zone thinking. The world is changing every moment. We need to allow ourselves to upgrade our minds and to flow with the changes that are happening around. If we keep our minds very close, हम लोग पीछे रह जाएंगे, हम लोग अटक जाएंगे. So let's melt these rocks. Let's question ourselves when we pass judgments, when we pass very strong judgments. This is like this and this is not like this. Allow and force yourself to have some openness and giving a benefit of doubt, allowing your mind to think beyond your beliefs. Maybe the beliefs were not right. So mental blocks superstition से भी आते हैं, अंधविश्वास से आते हैं, रूमर्स से आते हैं, किसी के बारे में रूमर्स है, आपने उसको कैल्सिफाइड कर दिया. It comes through various blocks. So I want you all to reflect and think, what is your mental block? What is the rock that you will let go of? Think about it. Are you having blocks towards religion, towards cultures, towards certain type of people? Are you having blocks towards social statuses? Many times people have blocks towards lifestyles. कि oh, ऐसे lifestyle का है मतलब अच्छा ही होगा. Like one such thing I will tell you. एक बार ऐसे हुआ था with a friend of mine. Now he उसका कोई दूसरा friend है, वो उससे पैसा मांगा कि यार मुझे थोड़ा सा 5 लाख रुपए का ज़रूरत है. So then this was a story between two of our friends. So now this guy gave 5 lakh rupees to other guy, thinking कि at that the other guy would actually move in very big cars. He had a very big luxury car. तो सोचा 5 लाख रुपए मांग रहा है, उसको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा, बट इतना बड़ा गाड़ी यूज करता है तो अच्छा ही होगा. Let me give him 5 lakh rupees. Not just one friend, there were a couple of more friends who gave him that money simply because they had this idea that oh, this friend of mine, he is using an Audi car, maybe इसके पास तो अच्छा ही पैसा होगा, 5 लाख रुपए तो मांग रहा है, let's give him. So again, this is a mental block. You didn't think beyond. Now later on, we got to know that this guy actually used to keep a big car so that he can ask for money and fool people, because लोग यही सोचेंगे कि इसके पास तो इतना बड़ा गाड़ी है तो 5 लाख रुपए दे देते हैं, दे ही देगा, इसका तो इतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसको. And actually people used to get fooled by this. And this guy fooled many people by taking money from them just by showing off a big car. Now, who are the ones who got fooled? The ones who had a mental block that the one who is driving a big car is financially stable. इसीलिए हम बुद्धू बन गए. तो यही mental block हम लोग को बुद्धू भी बना देता है, because we are just seeing one side of the story. Your mind will not be able to see beyond. Your mind, because in your mind you're so fixed कि okay, if somebody is having a car like that, तो अच्छा ही होगा. So this is just a one-off story. There are many times things happen when we get fooled, when we get cheated, not because of anything else, simply because of our calcified ideas and mental blocks of some previous experiences and an idea, oh, if it is like this, this means it is like this. But it is not necessarily like that. It may have something beyond. All right? So here we would like to close for today, and some thought for you to chew on, some food for thought, and try to reflect and think about this. All right? So thank you very much for joining in. Do share your comments as to what mental block or what calcified idea have you become aware of, or what are the different calcified ideas that we see around. Like one of the calcified idea which I just shared, this is a very common calcified idea. And when I saw this happening within some people around us, then we realized, no, we cannot get fooled just by looking at somebody's house or somebody's car. Okay? So thank you very much for joining in. Namaste.